and Munro. तो देखो Reed did what? Reed first introduced it on an experimental basis. सबसे पहले क्या किया? एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे इसको इंट्रोड्यूस किया था. एक्सपेरिमेंटल बेसिस in 1792 in some particular areas. It was first introduced in on experimental basis in some particular areas in 1792. एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे इंट्रोड्यूस किया 1792 में इन सम पर्टिकुलर एरियाज. ठीक है, जैसे पायलट प्रोजेक्ट होता है ना, इन द सेम वे. ओके, देन ही डिड व्हाट, राइट, इन 1820 the model was applied to wider area or larger area. The model was applied to wider area or larger area in 1820. So Reed and Munro introduced. Okay, later it was applied to wider area or larger area. 1820 it was applied to, okay, areas like, right, which are the selected areas here? So right, like Madras, that is South India, some parts of South India, right, some parts of Deccan region, some parts of Bengal, some parts of Northeast, and some parts of South India. Some parts of Bengal, some parts of Northeast, some parts of South India. किस एरिया में अप्लाई हुआ, टेक्निकल क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा. गॉट इट? सम पार्ट्स ऑफ बंगाल, सम पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया, सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट. ओवरऑल इट वाज अप्लाइड टू 51% of area that was under British rule. Overall it was applied to 51% of area that was under this British rule. Overall कहाँ तक अप्लाई था ये? 51%. ठीक है, it was applied to 51% of area. Where it was applied? Now this is the question. देखो, there were some areas where powerful zamindars were present. So it was easy for the East India Company to do settlement with them कि उनके help से आप revenue collect कर लो. But there were many such areas in India where these powerful class of zamindars was not present. So here you don't have any other option. You will have to do this settlement with the Ryats or the peasants themselves. So the same happened here. You can write that Ryats, write this. Okay, the areas where powerful zamindars were absent. It was applied to those particular areas where powerful zamindars were absent. It was applied to those powerful areas, those particular areas where powerful zamindars were absent. ठीक है, वो particular area जहाँ पे कि powerful zamindars नहीं थे. Got it? Now what does it mean? Applied to those areas where powerful zamindars were absent. So here it was a settlement that was done with individual peasants or the farmers, and the word for them is Ryat, right? It was a settlement done with individual peasants or farmers. It was a settlement that was done with individual peasants or farmers, that is known as Ryats. ये Ryats के साथ settlement, and that is why this is known as Ryotwari Settlement. Ryotwari Settlement. Okay, Ryotwari Settlement. और देखो, ये सेटलमेंट में भी ईस्ट इंडिया कंपनी इज इनहेरिटर और इनोवेटर. तो द आंसर इज इनहेरिटर. हाउ? तो देखो, शेर शाह सूरी हैज अडॉप्टेड अ मॉडल. Akbar also introduced the important elements of that model in his land revenue system of administration. Todarmal system जिसको कहते हैं. In that system, what was done? That proper land survey was done. The nature of soil was assessment was done. The nature of crop, इसको examine किया जाता था. Okay, the nature of soil quality कि ये fertile है कि semi fertile है और barren है. The nature of crop, all these were examined. Proper survey was done, and then assessment of land revenue was done. This was already done in India. ऐसा नहीं था कि you introduce something that was completely new. So here East India Company did what? They introduced this survey based mechanism. Okay, so read this. Survey based mechanism was introduced here. Survey based mechanism was introduced here. Survey based
mechanism was introduced here. Survey based mechanism was introduced here, right? Point 1, land survey was conducted. Land survey was conducted. Land survey was conducted, right? Point number 2, nature of soil was examined. Nature of soil was examined. Land survey was conducted. Nature of soil was examined. Okay. Land survey was conducted. Nature of soil was examined. Okay. Nature of crops were also examined. Nature of crops were also examined. And right, next point, and the assessment of land revenue or the estimation of land revenue was made based on these parameters. The estimation of land revenue was made based on these parameters. The estimation of land revenue was made based on these parameters. Got it? लैंड रेवेन्यू का एस्टिमेशन का पैरामीटर क्या होगा? ये सारे पैरामीटर्स होंगे. बेस्ड ऑन दीज पैरामीटर्स द असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू वाज डन. ओके, अब बताओ, दिस मॉडल वाज ऑलरेडी इन इंडिया, तो हम तो इनहेरिटर ही कहेंगे ना. आपके आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं कि और हम कौन सा मॉडल लाए, बट डोंट क्लेम दैट यू आर द इनोवेटर, यू आर द इनहेरिटर. ओके, दे इंट्रोड्यूस दिस मॉडल. ठीक है, बट व्हाट विल बी द प्रॉब्लम हियर? व्हाट ईआईसी ऑफिशियल्स विल डू? देखो, पीजेंट्स लिटरेट हैं कि इलिटरेट है? इलिटरेट. दे डोंट अंडरस्टैंड द टर्म्स एंड कंडीशंस. हम आज भी नहीं समझ पाते टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है पॉलिसीज की. Peasants also don't understand terms and conditions. So the EIC officials will do what? Over assessment of land revenue, over assessment of production. जैसे आपका क्रॉप से प्रोडक्शन अगर है ना 10 क्विंटल हो रहा है, so they will say that 15 quintals. Got it? If you are able to produce 100 kg, they will say that no, crop production will be 150 kg. So they will take land revenue on the basis of what? 150 kg na. So what they will do? Over assessment of production. And this will do what? Over assessment or overestimate of land revenue. Because the company want to gain more and more profits. And what will happen? Ultimate burden on peasants. तो रियलिटी देखो, आपने टेक्निकली क्या किया, 35, 40, 45% ऐसे लैंड रेवेन्यू अप्लाई किया. ओके, इन डिफरेंट एरियाज इट डिफर, बट एक्चुअलिटी द पीजेंट्स आर पेइंग हाउ मच? अगर ओवर असेसमेंट और ओवर एस्टिमेशन हो गया है तो 60 to 70% उनका लैंड रेवेन्यू चला जा रहा है. व्हाट विल हैपन? क्या वो एग्रीकल्चर करेंगे? नहीं, दे विल स्टार्ट लिविंग दिस ऑक्यूपेशन. तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी. तो राइट दिस पॉइंट, प्रॉब्लम और चैलेंजेस. Problem or challenges. Problem or challenges. Problem or challenges. Point 1, read this. Over assessment of production. Over assessment of production. Now you can relate the points. कर सकते हो ना? Over assessment of production. Right. Point number 2. Over estimation of land revenue. Over assessment of production. Point number 2 is over assessment of land revenue. Over assessment of land revenue. And point number 3, right? Point number 3 is over assessment, over estimation, and point number 3 is right. Okay, iska outcome ho gaya, that is the outcome, that high land revenue rates. High land revenue rates. When you will combine all these three, what will happen? जितना टैक्स आप तय कर रहे हो, जितना रेंट कलेक्ट कर रहे हो, जितना रेवेन्यू क्लेम कर रहे हो, एक्चुअली यू आर कलेक्टिंग मोर देन दैट. ठीक है, सो राइट दिस. अल्टीमेट बर्डन ऑन पीजेंट. सो हु इज द सफरर? पीजेंट क्लास इज द सफरर. एंड कॉमन पॉइंट्स यू कैन राइट जो आपको पता है. पीजेंट क्लास विल बी सफरर. फोर्सफुल कलेक्शन होगा कि नहीं? यस. यूज ऑफ कोर्सिव मीन्स? यस. पीजेंट्स सेविंग्स विल बी डिक्लाइन. They will be not be able to manage 2 meals a day. They will do what? They will start living this occupation of agriculture. They will start fleeing their homes. They will start evicting their homes. They will start selling their lands. Land क्या बन जाएगा? Sellable commodity. ये भी तो है. If the peasant is unable to pay,
तो EIC officials came with an person, that person was money lender. कहते थे if you don't have the money you can take loan and you can pay, money lender can pay. और क्या होता था, once you take the loan from the money lender will charge very high rate of interest, and the peasants were trapped in the vicious cycle of debt. They were never able to come out from this debt. एक बार अगर आप फंस गए तो फंस गए, उससे बाहर आप नहीं आ पाओगे। मेरी बात समझ गया ना? तो दिस इज व्हाट रैयतवाड़ी सिस्टम ऑफ सेटलमेंट। द इम्पैक्ट पॉइंट्स विल बी कॉमन, ठीक है, जो पहले बताया वही यहाँ भी आएगा, महालवाड़ी में भी द सेम पॉइंट विल कम, बट दीज सिस्टम्स प्रूव्ड वेरी मच बेनिफिशियल फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अब आपको लग रहा है कि व्हाट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिंगिंग रिफॉर्म्स इन एडमिनिस्ट्रेशन? दे आर trying to ensure their own economic gains. So in next class we'll discuss Mahalwari, then I will discuss other issues here, that how decline of handicraft, how industries declined, how forced commercialization of agriculture was promoted. Okay, I will discuss all this. Development of infrastructure was done. Okay, how financial institutions were developed during this time, and how early critics or early nationalists criticized the system of economic exploitation done by the British in India. This entire chapter is important. अच्छा, क्या ये केवल हमारे कोर्स के लिए important है और we should know this? वैसे भी जानना चाहिए, लग रहा है? Exactly. So when you will start understanding the theme, you will realize that we should know this, because at various times in your life you are basically what, adding something to your personality. कुछ ना कुछ अपनी पर्सनालिटी में ऐड कर रहे हो, बट जब हमारे पास पढ़ने का सही तरीका नहीं होता है तो बेसिकली वी आर नॉट एडिंग इन आवर पर्सनालिटी, वी आर एडिंग फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन इन आवर नो। जब आपकी हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, पॉलिटी की अच्छी होगी, सोसाइटी की अच्छी होगी, इन फ्यूचर यू आर राइटिंग एनी नॉवेल, तो आपके नॉवेल में वो रिफ्लेक्ट होगा। इन फ्यूचर यू आर अ फिल्म मेकर एंड यू आर मेकिंग फिल्म्स, है ना, तो आपकी फिल्म्स इंटेलेक्चुअल लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर पाएगी। मेरी बात समझ गए ना? इफ़ यू लेटर बिकम अ लीडर, so your speeches will be different from others, you will be able to hypnotize the masses। मेरी बात समझ गए ना? इफ़ यू बिकम एक्ट्रेस, तो आलिया भट्ट से थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग आपके पास होगा। मेरी बात समझ गया ना? तो जब हम कोई चीज़ ठीक से पढ़ते हैं तो उसका मतलब आलिया भट्ट ठीक तो है, अच्छी एक्ट्रेस है, बट देखो कभी कभी मतलब GS ठीक से पढ़ लिया होता तो इतनी कंट्रोवर्सी में नहीं आती। गॉट इट? चलिए, ओके। तो कोई क्वेश्चन है आपके पास? हैव एनी क्वेश्चन, हैव एनी डाउट? आकाश? देखो मैं तैयार हूँ, कैमरे पे मेरे सामने बैठना पड़ेगा। हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी? ओके, तो ठीक है ना? मैं कोई ऐसा मतलब मंडे वनडे से कुछ प्लान करता हूँ, 1.5 hour, आई थिंक दैट विल बी सफिशिएंट। आर यू कंफर्टेबल इन दैट टाइम, 8:30 to 10 नाइट? चल जाएगा? अभी मतलब थोड़ा सा बर्डन आपका क्लास कुछ कम हो जाए तो देन थोड़ा सा मैं प्लान कर लूँगा। जैसे कुछ क्लासेस कम हो जाएगी ना तो यू विल हैव सम टाइम, ओके, तो यू कैन एडजस्ट द थिंग्स। मेरी क्लास में हिस्ट्री में तो देर इज़ नो एनी प्रॉब्लम ऑफ रिवाइजिंग द थिंग्स एंड आई राइटिंग आंसर राइटिंग की भी ज़रूरत नहीं है। व्हेन यू राइट द आंसर योर फर्स्ट आंसर विल बी द बेस्ट आंसर विदाउट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, आई नो दिस, ठीक है। मैं क्वेश्चन अभी इसीलिए नहीं शेयर करता हूँ बिकॉज मुझे एक पूरा आंसर वाला सेशन भी लेके आना है, तो ज़्यादा बेटर होगा कि हम थोड़ा फेज्ड वे में चलें। आकाश, जैसे मॉडर्न इंडिया हमने किया, ठीक है, तो हम या तो ऐसा कर लेते हैं कि एक हिस्ट्री का आंसर डिस्कशन सेशन रख लेते हैं। मेरी बात समझ गया ना? तो इससे क्या होगा, वी विल डिस्कस ऑल GS क्वेश्चंस पहले, तो जैसे ही GS प्रीवियस ईयर मेंस के क्वेश्चन हम सारे डिस्कस